Good morning, student. Today topic 16.3 exercise probability, and now let's again formula probability of A union B equal to probability P of B minus P of A intersection B, and P of complement of A union complement B of probability of A intersection B whole complement means by De Morgan's law. By De Morgan's law. है ना, you already study in the De Morgan's law in exercise 1.4 I think 4.5. okay, De Morgan's law. So use this formula De Morgan's law, and there's not you could find the 1 minus probability of given. Okay, exclusive probability already given. P of an intersection B equal to 5 means null set means 0, and maximum minimum probability or given already study in the 10th class and 9th class also. P of not A probability of not A means 1 minus probability of A, general formula of this type. Very simple probability, very simple. Okay, simple probability chapter, very simple chapter for you. Okay, and next now write exercise 16.3. so using this formula, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट करता हूँ, बाकी आप सब कर लेना. ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऑलरेडी गिवन, तो वी चेक्ड ए इक्वल टू ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इक्वल टू 0.1, 2 इक्वल टू 0.01, ओमेगा 3 इक्वल टू 0.05, and probability of omega 4 0.03, probability of omega 5 0.01, probability of omega 6 0.2, and probability of omega 7 0.6. This is already given. So total probability equal to 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01 plus 0.2 of 0.06. This will be equal to 1 and 2, 3 or 6, 9, and this 1, 5, 6, 6, 3, 9, 10, 0 or 9 or 1, 10. This one, this is 1.0. This is a probability. Yes, assignment already given is which of the following valid addition? Yes, valid. Why valid? कि sum of the all probability is 1, not more than 1. Okay, so this were already verified. 0.1, this is 1.00 equal to 1. 1 आ गया ना आंसर. जिसका सम प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो दैट इज वैलिड, अदरवाइज कम होता है नहीं तो माइनस में आएगा तो नॉट वैलिड, मोर देन 1 तो नॉट वैलिड. क्लियर? सो यू कैन चेक ऑफ द BCD ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 2, कॉइन इज ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट. ये तो आप जानते ही हो, क्वेश्चन 10th क्लास में ऑलरेडी किए हैं ऐसे. एंड 5 P1 प्राइम नंबर इन द 3 odd even number, ये ऑलरेडी कर सकते हो ना. क्वेश्चन नंबर 4, कार्ड इज सेलेक्टेड एट फ्रॉम 52 कार्ड. ये हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस इन 52, तो 52 कैलकुलेट यू कैन सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वेरी सिंपल है. ऑल आर क्वेश्चन आर वेरी सिंपल. ए फेयर कॉइन इज विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 मार्क्स एंड अनदर फेस. ए कॉइन हैव 2 फेसेस. जैसे कहते हैं ना कॉइन कितना होता है, हेड एंड टेल. तो हेड इक्वल टू 1 एंड टेल इक्वल टू आप मान लीजिए 6 है. तो इक्वल टू जैसे H, T लिखते हो तो ऐसे लिखोगे 1,6 ऑफ कॉइन. कॉइन एलिमेंट H एंड T की जगह पे क्या लेना 1, यानी एक साइड में H 1 लिखा है और दूसरी में 6 लिखा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. एंड थ्रो ए डाई. डाई इक्वल टू हैव 1, 2,
3, 4, 5 and 6 element. Clear? One is the and mix of this test the total sample space. Finally, total sample space. So 1 collected all die and 6 number collected of all die numbers. So 1, comma 1, 1, comma 2, 1, comma 3, and this one the all pair. 1, comma 4, 1, comma 5, 1, comma 6, and then after 6, comma 1, 6, comma 1, 6, comma 2, so on 6, comma 6 also. Okay, the total number of element कितना हो गया 6 on then 6 कितना हो गया 12 भी हो गया ना, right, and 12, and then find the probability that of sum of number of that number first. Sum is 3, तो 3 वाले पॉइंट निकालिए जिसका सम ओनली 3 है, नॉट मोर देन नॉट लेस देन. ओके, तो सम दिस 1, 2 और नॉट गिवन 1, और नो एलिमेंट एंड ओनली वन एलिमेंट 1, 2, तो 1 + 2 = 3, तो दिस टोटल मैंने 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 = 1 और टोटल 12. एंड सेकेंड पार्ट सम is 12, so then probability sum 12 equal to total 12 is into 6, 6, क्योंकि बोथ पर नंबर 6 हो तो 6, 6 ओनली नो लेस देन, तो नीचे तो कम ही होते हैं, तो टोटल 1, तो दिस इज ऑल्सो 1/12. ओके एंड राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वेरी सिंपल. 3 coins are tossed. 3 coins. Are tossed. तो 3 को टोटल पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस बना लो, आपने बनाया ये ना, H H H H H T H T H T H H T H T T T H and triple T, and then after STT. STT is given, STT note. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया टोटल 8 सैंपल स्पेस है. फर्स्ट पार्ट 3 हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो 3 हेड वाली 1 H H H, मतलब 3 हेड वाला ओनली 1 ही होगा ना, तो टोटल 1 अपॉन टोटल 8. एंड सेकेंड पार्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, और 2 हेड वाला काउंट कर लो, 2 ओनली 2 हेड 1, टोटल गया H H T एंड दिस H T H and T H H, any other? No, only 2 head compulsory, so 1 2 3, this 3 upon 8. Okay, can you solve all these questions? करोगे ना? Okay, thank you. Solve these other questions. And next question number 10. Next question number, a letter is chosen at random from the assignment. Assassination. Find the probability that number first letter of a vowel, second consonant, the total words equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Clear? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, total 13. Find vowels. Number first, vowels कितना है 1 A, second A,
आई ए आई ओ 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? अब 6 टाइम्स आया बस ये, बट टोटल नंबर तो दिस है ना, तो वॉवेल्स तो आपका 1 हो गया एंड दिस 2 हो गया एंड 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. टोटल number of vowels in a given assassinations. So वैसे टोटल भी आना चाहिए राइट, वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 होता ही राइट है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वॉवेल 6/13 and second probability of a consonant, then consonant, other are consonant S S, then S and S, N T N 1 2 3 4 5 6 7 ही बचा ना, 6 और 7 13, then 7 probability by 13 राइट. ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, वॉवेल निकाल लो तो माइनस कर दो, कंसोनेंट आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 13 ऑलरेडी बिलोंग इनटू 14 15 16 क्वेश्चन. तो नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 14. 13 वेरी सिंपल है, वेरीफाई फार्मूला, जो फार्मूला मैंने लिखवाया उसी को यूज करना है, जो क्वेश्चन नंबर 14 में भी यूज होगा, 15 एंड 16 ऑल्सो. ओके, एंड गिवन 14 P of A equal to 3/5, P of B equal to 1/5. Find P or B, probability of A or B. If A and B are mutually, A and B mutually exclusive, हाँ yes exclusive. ओके, ए और बी मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था इन लास्ट वीडियो का. ए और बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, और मीन्स यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन. क्लियर? तो ए और बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन. यूज दिस फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, but mutually exclusive. The exclusive means P of A intersection B equal to 0 means 5. Okay, differentiate, use this. So therefore P of A plus P of B only, this P of A union. Okay, putting in this value, P of A 3/5 plus 1/5, that is 4/5, your answer. Okay, next question number 15. Can you solve this side question? You can solve. Okay, and this second part is थोड़ा सा different है, इसलिए मैं करा देता हूँ उसको. 15 P of E and same P of E is given 1/4 and P of F equal to 1/2 and P and probability of E and F 1/8 means probability of E intersection F is given, and means intersection. Okay, first part आप solve कर सकते हो उसे. You can solve question here in very simple, or means union according to question number 14. And second part, P probability of not E and not F means probability of not E dash, and means intersection, or not F means complement of F. Still fine. So probability of E complement intersection F complement equal to probability of E union F complement by De Morgan's law. क्लियर? इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एक आ गया.
अब इसको भी फाइंड करना है, एंड देन विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, राइट। कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, 1 माइनस गिवन प्रोबेबिलिटी, तो दिस 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, तो पहले फाइंड क्या करना हमें, यूनियन फाइंड करना है। नाउ दिस पी ऑफ ई, P of F minus P of E intersection F. Okay, so this will be 1 minus bracket P of E is given 1 upon 2, sorry 1 by 4 plus 1 upon 2 intersection 1 by 8 minus 1 by 8, 1 minus this LCM 8 for 2, 4 minus 1, 1 minus this 4, 6, 6 minus 5 by 8, this LCM 8 minus 5, 3 by 8, that your answer, 3 by 8. Okay, and let question number 15, 16 are very simple questions. Okay, so now let question number 17 you can solve. Question number 18 you also, but 18 down, clear. Solve by me. Question number 18. Question number 18. There is in class 11th a school 40% of the student study in mathematics, 40% maths, and 40%, then after 30% study in biology, 30% bio, and 10% of both math and bio, 10% both maths and bio. Okay, math bio. If the students is selected at random from the class, and find the probability that will be the studying mathematics or bio. Probability of studying math or bio. Okay, 40% math denoted by M, before bio. Okay, so probability of math equal to 40%, 40 by 100 equal to 2 by 5, clear, 0 0 2 by 5, and this same probability of B equal to B 30%, 30 by 100 means 3 by 10, तो इसे 4 by 10 में रहने दो, चूंकि एलसीएम में आसानी रहेगी, क्लियर। बोथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी मैथ और एंड मीन्स इंटरसेक्शन, math intersection bio is given 10 by 100 means 1 by 10, clear. This is already given condition. Right, this is already given, clear. Okay, now again, so this question, find this, so this means probability of math or bio, means probability of math or means union. Okay, and means intersection, this find. So probability of M union B equal to probability of M plus probability of bio minus probability of math intersection bio. Use this formula. M is also given 4 by 10, B equal to 3 by 10 minus this 1 by 10, whole LCM 3, 4 plus 3 minus 1 by 10, 7 minus 6 by 10, and all simplify 3 by 5. That's your answer, clear. Next question number last 20. In the probability that the student is a pair pass of the final examination, already given English and Hindi. English denoted by E and Hindi language denoted by H. Okay, तो probability and दे रखा है, English and Hindi given 0.5 and the probability of English
probability of English 0.75, probability of H find here, but neither probability means probability of E complement intersection H complement, neither Hindi nor English, yeah, neither in English nor Hindi is given 0.1. Okay, this formula background according to question, because neither will pass the एग्जामिनेशन. तो नो पास में तो नो इंग्लिश नो हिंदी, इसमें कोई पास ही नहीं हुआ हिंदी ना इंग्लिश में, तो उसका क्या है ये फॉर्मूला बनेगा. ये रीड कर लेना अच्छी तरह से. This formula change in the union form. Intersection given, E given and H already defined, and this change. So this will be equal to by De Morgan's law, P of this A E union हो जाएगा उल्टा H और इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा. कितना हो जाएगा जी? बाई De Morgan's law. Okay, this change. अब this will be this value नेगेटिव, तो नेगेटिव हटाना है आपको. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H इक्वल टू 0.1, right, and transfer to right side to left. This 0.1 equal to probability of E union H. This will be equal to 0.9 equal to probability of E union H. Use this formula. 0.9 probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H. Already given, putting this value. E is given probability of 0.75 and then find probability of this already given to 0.5. Okay, and solve 0.5, the 0.25 plus probability of H. This is 0.9. This transfer to right side. Minus 0.25 equal to probability of H means Hindi. 0.55 is 0 and 8 minus 2 6. 0.6 equal to probability of Hindi. Okay, that's your answer. Complete your exercise 16.3. Very simple. Only one exercise is a probability. Wagi other side only relative to chapter 1. Meaning set, sample space as a event. Okay, complete. Any doubt you can ask to direct me. This syllabus will be coming in the PT3. Okay, thank you.